Nidhi, you have your presentation, right? Have you prepared for it? तूने कर ली उसकी तैयारी? Yeah. What practice? This is something what I do every day. I'm fine. I'll do it. I'll manage it. Okay. Good luck. Good luck. Do well. All the best. What happened? Why are you so upset? Don't ask, yeah. Don't ask. The whole thing went bad. I was so nervous and blank. The audience, oh my god, it was so difficult. I don't know what to do. It was tough, yeah. क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी? It happens because we do not spend time preparing for it. And that's why they say, if you fail to prepare, you actually prepare to fail. And if you do not want to fail, please watch this video because I'm going to share with you some very important tips how you can prepare for your public speaking assignment and you can make your public speaking experience impactful. So keep watching, and I'm Nidhi, your communication skills trainer, here to help you understand how to prepare for public speaking. At some point in life, you will have to speak. You will be delivering some form of a speech or a presentation. It could be a conference, it could be a seminar, it could be a virtual event, an award ceremony, it could be a social event, it could be a speech, a special occasion, can be anything. And that time that you have on stage, you need to own it. And for owning it, you need to prepare well. सिर्फ आपकी स्किल्स और आपकी नॉलेज हर वक्त काम नहीं आ पाएगी. उसके लिए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है well in advance. So allow me to help you understand those small little things that could make your public speaking assignment impactful. The first one is very important. It is crucial to know this one and to prepare for this very carefully. I always talk about this in my various sessions also, and even before any session that I go into, this is something that I always speak about. And this is knowing your audience. अगर मुझे पहले से पता होगा कि मेरी ऑडियंस क्या ढूंढ रही है, वो वहां पर क्या सोच कर आ रही है, वो किस लिए आ रही है, what is in it for them, then I will be able to prepare accordingly. I need to ensure that my audience enjoys whatever I share with them, and that is only possible when I know what they are looking for. So इस छोटी सी चीज को आप मामूली मत समझिए because ये बहुत जरूरी है आपके उस पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस के लिए. अगर आपकी ऑडियंस बहुत नॉलेजेबल ऑडियंस है तो आपको अपना लेवल, अपना कंटेंट एक लेवल अप करना पड़ेगा. यू कैन नॉट गिव देम अ वेरी सिंपलिस्टिक कंटेंट. अगर आपको पता है आपकी ऑडियंस में जो लोग हैं उनका वोकैबुलरी या उनका नॉलेज बेस अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप अपने लैंग्वेज को, अपने कंटेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज योर ऑडियंस. आउटलाइन योर मेन पॉइंट्स. पहली बात तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप वहां पर क्यों हो. ओके, व्हाट इज द आउटकम गोइंग टू बी फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीकिंग असाइनमेंट और द स्पीच और द प्रेजेंटेशन. आप मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हो. एंड वंस यू नो व्हाट योर आउटकम इज एंड व्हाट मैसेज यू वांट टू कन्वे, यू कैन आउटलाइन द होल थिंग. You can form a structure to your presentation, to your speech, or whatever assignment that is, because this structure will allow you and help you to move to the next point that I'm sharing with you. क्योंकि जब तक आपको ये outline और structure नहीं पता, तब तक आप इसके next step आपके कोई फायदा नहीं करेगा. Next step would be to decide what is going to be your mode of delivery. Now, what do I mean by a mode of delivery or presentation? आप किस तरीके से डिलीवर करेंगे. क्या ये एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन रहेगी, क्या ये एक ऑफलाइन इवेंट रहेगा, क्या आपको पावर पॉइंट यूज करना है या आपको प्रॉप्स यूज करने हैं, क्या आपके पास इन दोनों में से कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ अपना स्पीच यूज करना है. सो हाउ इज इट दैट यू आर गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग इट, एंड बेस्ड ऑन दैट you can decide what are the various prompts and aids you're going to use. किस तरीके से आप इस चीज को शेयर करना चाहोगे, अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहोगे, वैल्यू ऐड करना चाहोगे. वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल पॉइंट है ये बहुत, कि आप किस तरीके से करना चाहते हो. अनदर पॉइंट, बहुत लोग इस चीज को मिस कर देते हैं. प्रोजेक्ट आया, कोई असाइनमेंट आया एंड परफेक्टली फाइन, चलो हम डिलीवर कर देंगे, उस चीज को आप फुलफिल करोगे.
लेकिन कुछ क्वेश्चंस जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ क्वेश्चंस के जवाब जानना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली. प्लीज अंडरस्टैंड एंड आस्क व्हाट वुड द एनवायरनमेंट एंड द सराउंडिंग्स बी. किस तरीके की जगह पे आप प्रेजेंट करोगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट a lot of preparation can be done. Now, when I go for my presentations or my sessions, I ask very clearly what would I get and what is it that I am looking for. I always ask how big is the room going to be, kitna space hai, kitna nahi hai. That allows me to understand and structure my activities for a particular session. I always ask what are the various forms of projection that I have. Would I have a laptop? Do I need to carry my laptop? Would I have a projector, a screen? Would all of this be there? A mic, an output, a sound output, speakers. Everything is very important. What kind of a room is it going to be? सब कुछ बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर आपको अपने आसपास की सराउंडिंग्स का ही नहीं पता तो आप उसको कैसे सक्सेसफुली डिलीवर कर पाओगे. उसके बेसिस पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिप्लेस कर सकते हो. सो प्लीज़ इंश्योर नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास कोई असाइनमेंट आता है, आपको मौका मिलता है, तो आप ये जानिए कि एग्जैक्टली कहाँ पर है. अगर आपको ये चांस मिले, प्लीज़ गो एंड विजिट द प्लेस इफ इट्स पॉसिबल. इफ नॉट देन वर्बली क्वेश्चंस पूछ के या पिक्चर्स मंगा के आप देख सकते हैं. और कुछ नहीं तो थोड़ा सा जल्दी चले जाइए एंड जाकर देख लीजिए कि किस तरीके की जगह है. One more thing that's very important is time. Most of the speakers, they love talking, and once they start, they go on, they don't stop. But time management is very important. If you have been given 1 hour to speak, please ensure that you finish in that 1 hour, right? Keep space for question and answers. अगर आपका Q&A राउंड का स्कोप है तो उतना भी चांस रखिए, goof ups का चांस रखिए, थोड़े ग्लिचेस हो जाते हैं उसका भी स्कोप रखिए, पर कोशिश करिए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को उतना ही प्लान करें, उतना ही प्रिपेयर करें कि वो उस टाइम के लिए काफ़ी हो. यस, कभी कभी होता है कि discussions go on and कुछ specific important pointers रह गए हैं. If that happens, always ask your audience if they are fine with it, you taking 15-20 minutes extra. One very important one is practice. प्रैक्टिस के बारे में मैं आपसे अभी बात नहीं करूंगी. प्रैक्टिस के बारे में मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि वो भी किस तरीके से करनी है बहुत ज़रूरी है. सो वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर दैट वन. आई होप दीज पॉइंट्स हेल्प्ड यू. शायद आपको थोड़ा सा अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन या स्पीच या असाइनमेंट प्रिपेयर करने में थोड़ा सा मदद करे. Do let me know how you spend your time preparing and what is it that you focus a lot on, and also let me know what from this video will you implement now onwards. And do join my Facebook community. You can post your live questions there. I will be answering all your queries and I will help you become a better communicator. And the link to this Facebook community is in the description of this video. And if you have not subscribed to my channel and my various platforms, please do that right away so that you can be updated with what I'm coming up next. And बहुत कुछ कर भी चुकी हूँ, पोस्ट भी कर चुकी हूँ in the past. आप उसको भी check out कर सकते हो. You will find a lot of value there. So go ahead, subscribe to my channel, and until my next video, take good care of yourself. See you soon.